हेलो एवरीवन, दिस इज किरण हियर। आज का वीडियो जो है वो पाइथन का मॉक इंटरव्यू है। बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज हम शेड्यूल कर रहे हैं। आप लोग भी नीचे दिए गए फॉर्म भर सकते हो और हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ताकि आपको भी यूट्यूब पे इस बड़े प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है वहाँ आने का मौका मिलेगा। लोगों को आपका कॉन्फिडेंस दिखाने का मौका मिलेगा और खुद को चेक करने का भी मौका मिलेगा। और जो आंसर्स देंगे उसके ऊपर भी आप जब खुद देखोगे कि आपने क्या आंसर्स दिए थे, सुधरने का पूरा मौका मिलेगा। तो बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, आप भी भेज सकते हो। आज मेरे साथ है सिद्धि। शी इज फ्रॉम परभनी, राइट? या सो उन्होंने जो उनका इंजीनियरिंग किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, और ये है आम्बे जोगाई कॉलेज, है ना? सो गुड, वेलकम सिद्धि। ओके, सो let's start with the interview. And she's more aware about the core Python only, not Django or maybe at the framework level. So let's start with something. Which version of Python you are using? Python 3. Python 3. Any difference between Python 2 and Python 3? Yes, Python 3 is a basically new version of Python and it is used extensively, and Python 2 is the not used more because in Python basically, for example, in Python 2 we can write a statement like print, and in Python 3 we can write a function printf, print with parentheses. Got it. So right now people are using Python 2, right? Which editor you are using for coding? VS Code. VS Code. Yes. Okay. If you are using VS Code, do we need to install Python or not? No. In VS Code automatically it will be coming? नहीं, Python install करना पड़ता है. Python install करना पड़ता है? Yes. तो Python पहले इंस्टॉल करेंगे, फिर VS Code इंस्टॉल करेंगे, फिर अपने आप VS Code को पता चल जाएगा Python? We need to give a path of an interpreter, right? Yes. What is interpreter? Interpreter basically Python is also interpreted language. Interpreter will check the code line by line. So Python is an interpreted language. Okay. Python को टाइप इंडिपेंडेंट लैंग्वेज ही बोला जाता है, क्यों बोला जाता होगा? टाइप इंडिपेंडेंट because मतलब टाइप क्या होते हैं? डेटा टाइप्स क्या है? Data types basically two types of data types, fundamental data types and collective data types. In fundamental data types, list, fundamental int, float, string, boolean data types, and in collective data types, list, tuple, dictionary, set. Collective data type क्यों बोला इसको? Because it is a collection of elements. किस किस में, किस टाइप में होता है collection of elements? It is a collection of element within a list. List means within a square bracket. In dictionary within a curly braces. Within a tuple means within a parenthesis. And set in set within a curly braces. Okay, so ये उनके कन्वेंशन है कि ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट लिखा तो लिस्ट होगा वगैरह सब कुछ. तो मुझे लिस्ट के अंदर की 2-3 मेथड बताओ, सेट के अंदर की 2-3 फंक्शंस बताओ. ओके, फंक्शंस होते हैं ना इनबिल्ट, लाइक अपेंड और समथिंग. तो लिस्ट, सेट, टपल एंड डिक्शनरी. कैन टेल मी ईच वन with respect to 2 methods. Okay, we use the insert method in list. Also we use the append method in list, and in tuple we use the remove, because in tuple is immutable. In set we use the in set also we use the add method. And in dictionary we can add the method using atoms and also the values function. Okay, great. How to do comments in Python? Basically we need a if we need a single line comment, then we need hash, and if we need a multi-line comment, then we need a triple quote. Okay, difference between list and tuple? Yes, basically list is a comma separated values within a square bracket. It is a mutable.
and ordered, and tuple is a comma separated value within parenthesis. It is immutable. It is also ordered. When to use break and continue? If we need to break that function, then we need the break keyword. And if we need to skip some iteration, skip single iteration, then we need continue. We use continue. Okay. Can you tell me the scenario exactly, when to do break, when to do continue? Any scenario, any general life scenario, like if I want to implement this, then I will be doing this, like that. Okay. For example, if we had printed the numbers from 1 to 5, and we did not need that much numbers, then if we need the only 1 to 3 numbers, then we break the function by using the condition. And if we need the 1 to 5 number, but we don't need the 4, basically a specific 4, then we use the condition with continue, and it will skip that iteration. Okay, difference between append and extend? Append will add the single element within a list, and extend will add multiple elements in the list. How to add multiple elements by using extend? By using basically list name dot extend within a parenthesis list or. Okay, what is join and split? Split will split the string into a list, and join will join the list into a string. Okay. What is the use of this underscore init underscore? Basically, it is one of the constructor, and also we pronounce it as a special method, and it is used in class and used for initializing the instance variable. Okay, what is self? Self is a keyword. Self is a basically it is a variable within a constructor or within any function to access the instance, to access the object reference. Okay, when you have used that? If we had one constructor like init, and the self is the first parameter of init function. So if we is it a constructor you are saying? Yes. So constructor and init is same? Yes, it is init is a constructor. Okay, if I don't write constructor in a class, then it will not give error, but it is a one of the good programming practice, I think so. Can we have augmented constructor also? Augmented constructor? Yes. And without arguments also? Yes. So will that without argument constructor put automatically by Python or not? But we need a self argument in that. Self, right? Yes. Yeah, but that is a default constructor, default right? Constructor. You know oops concept? Yes. What is the difference between inheritance and abstraction? Basically, inheritance means we can access the attributes and method of a parent class to the child class. Means child class will access the method and attributes of the parent class. And in abstraction, we can hide the data which we don't need to see to the all. So that data is hidden in abstraction. Okay, but you can hide through private method also, no? Yes. Then? Private method is a abstraction. Private method is one of the abstraction method. Okay, how to write that private method? By using getter and setter. Can you write a private keyword there? प्राइवेट लिखना होता है क्या? अगर मुझे कोई फंक्शन मैंने बनाया ऐड नाम का, और मुझे उसको प्राइवेट करना है, प्राइवेट वर्ड लिखना पड़ेगा क्या? In Python, maybe no. But how to do something private in Python? By using getter and setter. No, double underscore.
Understood? Okay. Then, did you use yield method? Yes. Do you use this return statement also? You might have used. Yes. What is difference actually? Return statement is a last statement of the block, and yield will continue the iteration as per the demand. Okay, yield Yes. means what? Yield is used in a generator. Can you give me some example? Mm, When to use this yield? if we need, for example, if we need a even number, then we use generator with yield. Okay. Generator with yield. Yes. Okay. Because with the help of list, it requires more memory as compared to the generator. And okay. I see in your resume there are a lot of projects also, right? yes. This is a garage management system. Yes. What it is actually? What it was doing? Basically, it is a garage management web page, and it has the information about the single garage. And it will access, and people will access through their mobile, and they will see the What is garage means? Garage means the servicing center for the bikes. Okay. So managing the stock available in the garage, then check for repair estimates, delivery. Also, it will make payment receipts, right? Yes. How you implemented these payment receipts? With the help of payment receipt, with the help of some table and that and using. Which language you use there? SQL. Okay, so you mean to say you know SQL. What is triggers in SQL? No, I don't know SQL, but that project was within 4 students, so I had done front end only. So what do you use in front end? I use Bootstrap, HTML, CSS in front end. Okay. Can you tell me something like in HTML there is an input tag, right? Yes. What's the use of this thing? Attributes of input tag? No. टेक्स्ट बॉक्स बनाया है कभी HTML में? Yes. हाँ, तो क्या लिखना होता है उसके लिए? Input will take the input from the user basically. So we need to write input tag within placeholder होता है कि हम उससे लिख सकते हैं, वो hide होता है. Okay. Placeholder नाम का attribute है क्या? नहीं होता है input tag में, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है. What's the use of difference between like args and k-args? Sorry, sir, I don't know about this. Argument, star argument. Arbitrary arguments and Yes. keyword arguments. Yes, basically arbitrary arguments are used in function to access the variables from object, and it is used. And keyword arbitrary arguments, and it is keyword arbitrary arguments are also a argument which will access the keyword, which will access the arguments from the function, and it will write a dictionary. Basically, keyword arbitrary write a dictionary and return a dictionary, and arbitrary argument returns a list. Did you ever use that KW args? Yes. Keyword args you used? Yes. When you used? Can you tell me exact scenario? क्या सिनारियो था जब आपने यूज किया? When we need multiple arguments and we don't know how much arguments we needed, then we use the arbitrary arguments and keyword arbitrary arguments. Okay. Split method किस लिए होती है? To split the string into a list. Okay, what is keyword? Is double equal to? Basically is compares the memory location
and equals to compares the values. कब यूज करना चाहिए सब? If we compare, if we had any condition, then we use the double equal to. And if we need to compare the memory location, then we need a is. You know MySQL, right? So in MySQL there is schema, then tables, right? And inside table there are rows and columns, correct or not? Yes. If I want to fetch data from two tables, what to do? From two tables. At a time. I don't know. We need to put joins. Okay. Understood? Yes. You know joins? No. But did you ever heard this word? Yes. Great, great. So I can see that HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap. In JavaScript, what you have used? I had used Bootstrap, so inbuilt JavaScript is there in Bootstrap. Another project is like attendance management system. Yes. Here also you worked on front end only? Yes. Why you are using always front end? Because I had. आप Python का कोड क्यों नहीं लिख रहे हो? हमेशा यही क्यों कर रहे हो front end? मैंने I had done now classes of Python, so. अभी कर रहे हो classes? Yes. कौन पढ़ा रहा है? वैभव सर. समझ आ रहा है? Yes. Great. आपको 10th में 88% है, 12th में 72 है और ये 8.5 है CGPA, right? Yes. Okay, percentage are good. We take computer science. Okay, कॉलेज में कोई रैंक वगैरह आती थी? Yes. क्या था? क्या कैसे आता था? क्या था? टॉप 10 में आ जाते थे आप? In first and second year, I got the 4th rank. And third year, final year? In final year, I don't know because our degree is not completed. तो अभी कब का पास आउट है आपका? 2024 का है ना? 2024. But तो तब से अभी तक क्या किया है? पाइथन पढ़ रहे हो? Yes. तो अभी इतना देर क्यों लग गया? अब तो 25 चल रहा है. Because college was there, so. अलाउ नहीं करते थे? No. पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं? No, means allowed, but there was not good classes for. Where in Amba Jogai? Yes. ये कहाँ पे है? In Marathwada. परभनी के पास? बीड़ के पास. तो वहाँ पे कोई क्लासेस नहीं है ऐसा बोल रहे हो? क्लासेस थे, लेकिन मैंने मतलब अच्छे नहीं थे. GitHub पे प्रोजेक्ट डाल के रखे हैं? हाँ. Which project you added there in GitHub? Garage management and attendance management. Okay, okay. फिर 12th आपने लातूर में किया, 10th कहाँ किया? सोनपेट. तो हर जगह डिस्ट्रिक्ट आपने चेंज की क्या? Yes. 10th सोनपत, 12th लातूर और इंजीनियरिंग? अम्बेजोगाई. ग्रेट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. अच्छा है, मींस एटलीस्ट यू गेट चांस टू स्टे हियर एंड देयर एंड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. ओके. और रहना कहाँ है? बीड़? नहीं, सोनपेट. सोनपेट, जहाँ पे आपने 10th किया. Yes. फिर वहां से लातूर, फिर ये. गुड, नो प्रॉब्लम. Okay, so again coming back to our topic, that is Python. Inheritance पता है? Yes. तो अगर inheritance नहीं रहता तो क्या प्रॉब्लम हो जाती? We can't fetch the attribute and methods of the another class to the other class. क्यों नहीं हो सकता? ऑब्जेक्ट बना के तो हो जाएगा ना? Yes, but class with the help of at object only, na. We can access all the elements of the parent class or to the. By creating an object or not? By creating inheritance. Okay, अगर मैंने आपको बोला कि दो नंबर्स को स्वैप करना है without using a third variable, how you'll do that? For example, A is equals to 3 and B is equals to 2. Then we need A comma B equals to B comma A without using a temporary variable. We can swap the elements. How? Or else we can add the elements in first. Add and subtraction. Yes, addition and subtraction. Okay. कोडिंग करते हो कि नहीं?
Yes. कभी कोड लिखा है प्राइम नंबर का? Yes. बताओ तो क्या लॉजिक लगाया था? Prime number, basically prime number is the number which is divisible by itself and only one. So we can write a logic that if the number is divisible by any other number within a range of 2 and till that number, then return false, else return true. मतलब आपने लॉजिक भी लिख के देख लिया है? Yes. ओके, अब मुझे बताओ ये वाला फैक्टोरियल निकालना है मुझे। Okay. तो कैसे करेंगे? Basically factorial is a multiplication of the element from 1 to that number. So we use for loop for the factorial. First of all we रेंज फंक्शन यूज किया था कि इसमें? yes. ओके। First we need a initialization variable, that is example, for example multiplication is equals to 1. We need to initialize the 1. And then we use for loop for I in range, like from 1 to that number. And then we can multiply equals to multiply into I. Okay. And then I कहाँ से आया? for I in range इन कीवर्ड यूज करते हैं ना? yes. ओके, एनाग्राम क्या होता है? Anagram is the basically anagram is the two strings. If two strings has a same character in a different order. ओके, फाइल हैंडलिंग में मोड्स होते हैं? Yes. रीड मोड, राइट मोड, और क्या होता है? Open. क्या है ये सब? In file handling, if we need to write the write something, then we need write mode. If we need to read something, then we need read. And if we want to open that file, then we need open. तो रीड और ओपन में क्या फर्क है? First we need to open the file, then we have to read. अगर मैंने बोला आपको कि एक फाइल से दूसरे फाइल में डेटा कॉपी करो, हाउ यू विल डू दैट? By using copy. क्या करेंगे, एक जगह ओपन कर लेंगे फाइल, समझ लो ये और ये है, राइट? इसको ओपन करेंगे, इसको रीड करेंगे, उसमें फॉर लूप लगाएंगे और इस फाइल को भी ओपन करेंगे और राइटिंग का कोड उस फॉर लूप में लिख देंगे। कॉपी होगा कि नहीं कोड? जब ये रीड करते जा रहा है, रीड करते करते बाइट्स निकलेंगे, उसको राइट फंक्शन में डाल देंगे, ये फाइल में राइट हो जाएगा, है ना? नो प्रॉब्लम। सो यू हैव गुड courage, confidence, communication, everything. You have good knowledge also. And my advice would be, you need to go beyond what you know. जैसे अभी लिस्ट और सेट है, सर ने आपको 5 मेथड पढ़ाई होगी, तो पहली स्टेप है वो 5 को देखना, बट उसके बाद की जो स्टेप है वो बहुत डिफिकल्ट है। 5 के बाद खुद से 5 करना। अगर सर ने 10 मेथड्स पढ़ाई तो 2-3 मेथड आपको भी आनी चाहिए। ये समझ में आया? क्योंकि होता क्या है ना, आप उतना ही पढ़ते हो जितना सर पढ़ा रहे। होता है कि नहीं होता है? अब सर भगवान तो नहीं है ना, बराबर? बहुत सारे लोगों का माइंडसेट यही है कि सर ने पढ़ाया, इंस्टीट्यूट में गए तो हो गया, ऐसा नहीं है। तो आपको नॉलेज और इनहांस करने की जरूरत है। आपने कर भी रहे हो, जितना भी पूछा मैंने आपको आया भी, ये समझे ना? बट जैसे हमेशा बोलते हैं कि समाधान ही नहीं रहना है आपको, तो और थोड़ा सा ढूंढना है, समझना है। मेटा क्लास क्या होता है? Meta class is used to modify the class. कैसे? By using metadata keyword. By using meta keyword. Yes. पैकेज क्या होता है? Package is collection of modules. पर पैकेज जब बनता है नया तो कौन सी फाइल एक्स्ट्रा बनती है? अंडरस्कोर इनिट, समझ में? याद रहेगा? जैसे आज आप घर में जाके क्या करो, राइट क्लिक करके न्यू पैकेज बनाओ और उस पैकेज को खोल के देखो, वहां पे आपकी एक फाइल मिली। ये समझ आया? ओके, सो मेनी क्वेश्चंस यू आंसर्ड। आई थिंक एवरीथिंग आई आस्क्ड, राइट? एनीथिंग यू थिंक दैट आई हैव नॉट आस्क्ड एंड यू नो इट? बोलो। व्हाट इज पाइथन? व्हाट इज पाइथन? ओके, तो बेसिक हो गया। फिर भी और कुछ जो टॉपिक मैंने छोड़ दिया हो, जो पूछा नहीं आपको?
आपको आता है और मैंने पूछा ही नहीं। क्लास मेथड एंड स्टैटिक मेथड। ओके, तो एड स्टैटिक मेथड एनोटेशन है। एड स्टैटिक मेथड पता है? हाँ, स्टैटिक मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड? नो। ओके, स्टैटिक मेथड बताइए। Static method is used in class, and it basically it does not have access of the all attributes and method of a class. It is defined within a class, and it is created by using @static method decorator. डेकोरेटर? Yes. क्या है डेकोरेटर? A decorator is used for modify the function without using the actual code. ओके, एक्चुअल कोड में चेंजेस कर दे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? Because we had write that code. If we need more information to write in that code, then we use decorator. अब मुझे देखो, हेलो नाम की स्ट्रिंग है, उसके अंदर ई है कि नहीं, कैसे चेक करोगे? If hello is hello in that e na, if e in hello, in operator is yes, है ना? in operator. Good. So I think most of the questions I have asked, right? Yes. Okay. Anyway, so you enjoyed this or not? Yes. तो अगली बार और पढ़ के आएंगे। Yes. और थोड़ा सा पूरा पाइथन पढ़ के आएंगे, क्योंकि मेरे पास भी बहुत स्कोप नहीं है पूछने का, है ना? अभी नमपाई हो गया, पांडास हो गया, मैटप्लॉटलिब हो गया, ये सब मुझे चाहिए होगा। और उसके बाद क्या चाहिए होगा? जैंगो। उसके बाद एंगुलर, उसके बाद रेस्ट एपीआई, इतना सारा आपको करना है। फिर एसक्यूएल अभी हुआ नहीं आपको, तो वो भी करना है आपको। समझ आया? इतनी सारी चीजें आपको किस टाइप से पढ़ते हो वो देखना है, ध्यान रहेगा नहीं रहेगा कैसे भी। क्लियर? अभी तो ये शुरुआत है, चैट जीपीटी पे डालते जाओ। बाकी ये सब लोगों के लिए भी गाइस एक एडवाइस है कि जैसे अभी इन्होंने टपल, लिस्ट, डिक्शनरी बोला, हम थोड़े और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन अगर करना चाहे तो बहुत से बार कैंडिडेट्स आंसर नहीं दे पाते हैं। इसलिए मेरी ट्रिक आप सबको रहेगी कि आप लोगों को क्या करना है, चैट जीपीटी पे लिखना है ट्रिकी क्वेश्चंस ऑन लिस्ट। ये समझे? आंसर नहीं देखने उसमें, क्वेश्चंस तो पढ़ो पहले। समझे? तो सब लोगों को, आपको भी और लोगों को भी, सब लोगों को एडवाइस रहेगा कि चैट जीपीटी की हेल्प लीजिए आंसर्स देखने के लिए, नहीं क्वेश्चंस ढूंढने के लिए। आंसर्स तो मिल ही जाएंगे वहां पे, है ना? सो सिद्धि, आई एम वेरी हैप्पी दैट you were able to answer most of our questions. Okay, so what it called, thank you for your time. Thank you. आपने इतना समय निकाला, and many people, I'm again telling, many people doesn't have courage to come ahead, come forward. At least सिद्धि ने वो कॉन्फिडेंस दिखाया, उनका पूरा हुआ नहीं था पाइथन, फिर भी she came for giving interview like that. You guys, wherever you got there into your syllabus, please come ahead, face interview. Come here and ask me whether I should be giving interview on this topic, that topic. I'll take every topic. And for other audiences, those who don't want to give interview, they just here to see others. उन लोगों के लिए होता है ना, कुछ लोग जो सिर्फ देखते हैं and they are for comments, उनके लिए ये है कि आपका काम सिद्धि को जज करना नहीं है। हमेशा की तरह मैं बोलूंगा कि मेरे क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए और खुद आंसर देके देखिए। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो इंटरव्यू वाइवा जैसा ही था, ओरल टेस्ट जैसा था, बट यस वाइवा जैसा ही होता है गाइस। बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव, बहुत ज्यादा ये नहीं होता है, बेसिक क्वेश्चंस ही होते हैं, सिंपल, बट उसको आपको सही से आंसर देना होता है। आधे लोग तो इधर ही कट जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस ही नहीं है। सही है? अब यहाँ आने के लिए मना तो है नहीं किसी को, बट कुछ लोगों के दिमाग में आएगा अरे यार मैं यूट्यूब पे जाऊंगा, ये प्रॉब्लम होगी क्या? वो कुछ भी प्रॉब्लम वगैरह नहीं होती है। तो आपके कॉलेज में भी भेजिएगा ये इंटरव्यू। अंबाज हो गई, कोई कॉन्टेक्ट में है वहां पे अभी? हाँ, ग्रुप। कौन है? टीपीओ? नहीं, एचओडी सर। एचओडी सर है? कितना दूर पड़ता है यहाँ से कॉलेज? 6 आवर्स लगते हैं। बाप रे! कितनी ब्रांचेस है? 4 to 5। तो एम्बर्स हो गई, यहाँ से 6 घंटे पड़ता है, मतलब बहुत लंबा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सिद्धि, थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एवरीवन। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट इंटरव्यू।